So hi everyone, this is again a video on a topic tree. So today we're gonna start this topic. We already had a video in this topic which explains all the basics, all the fundamentals we should know before starting this topic and going towards the questions. So today we are gonna jump over this question. This is an easy question of lead code where we don't have that much difficulty for solving this. It's gonna be so easy, but you have to be patient and you have to take the time that you're gonna take to understand the depth and the concept of tree, and then you can apply your concepts. You can make your own logics, but before that, first just be patient and try to understand, try to read more, try to have your own imagination over this topic so that you can make your own logic and you can probably will be able to solve better questions than this. So in the today's video we're gonna do this question 104 of LeetCode, where we have to find the maximum depth of binary tree. So basically what that mean is from the root node, जो सबसे ऊपर नोड होता है अपना, उससे जो सबसे दूर नोड होगा going towards the child nodes, मतलब ये अगर हम 3 से देखें तो यहाँ पे जैसे 9 और 20 एक सेम लेवल पे है. ये पेरेंट नोड कहलाएगा, ये चाइल्ड नोड कहलाएंगे. एंड आफ्टर दैट on 20 we have 15 and 7. So if we think about the maximum depth, what it means, अगर एक कुएं के बारे में सोचे तो उसकी सबसे गहराई गहरा हिस्सा वो होगा जो सबसे नीचे है उसके टॉप से. So similarly, in this question, from 3 we have to go towards 20 and then we have to go towards 7 so that we can find the maximum depth or the further furthest element which is present in a tree as a child. Okay, so here we have all the inputs. It is given in form of this, and we have to give the output which is maximum depth, which means from taking 3 then 1, 2 and 3. So the 7 is on third position, so output will be 3. So over this question there are multiple ways we can solve this question, but we're gonna probably choose to go towards recursion, because in the early stage of this topic recursion is more important to learn this topic. Most probably it helps us that we can assume, we can imagine, we can get the grasp of this topic. So before jumping toward the code, if you think you don't understand tree, then don't think about the code first. You have to grasp the logic and mold it in your own imagination, and then your own logic will start to make, and you can mold that question into a logic that you're gonna make for that particular question. So in this early stage, one idea is that make tree easy is think about it as parent and child. So the root in this is the representation we use to show the uh, parent or the root node. So from this we have to go either to left, either to right, and this is what you're gonna imagine कि कहाँ की तरफ मैं मूव करूँ कि मुझे जो मुझे आंसर चाहिए वो बेटर और जल्दी मिल जाए. Either वो लेफ्ट के साइड पे हो या तो राइट के साइड पे हो, and based on your thinking you can go wherever you want. So the first pattern we're gonna do is that we have saw in the lead code, where we have to find the depth, and for finding that depth we have to, let's see what we can learn over here. Okay, so in this question there's also different methods. You can use DFS, BFS, BST and LCA, but it will not be that good if you are beginner, because these topics will take time, and if you are a beginner in this topic you should go for a recursion method. And this is a recursion method you're gonna use
now you have the idea of how the logic can be implemented, and the logic is going to implemented like in this question. As a beginner, you will first think about that, take a count of a level and traverse and then store the maximum count and return. Okay, अगर गहराई की तरफ जाओ तो जो सबसे लंबी दूरी होगी उसका काउंट ले लो और उसको रिटर्न कर दो. But this is exactly kind of independent thinking you can make as a beginner. But instead ask, can I solve this with what I already know? So this is what kind of thinking you should always keep while solving the question in the lead code. So let's see towards the answer. Let's go. एक्चुअल में हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं. इसमें रहेगा हमारा एक मैक्स डेप्थ करके फंक्शन जो हमें लीड कोड देगा, और हमें एक रिकर्जन का बेसिक मतलब होता है कि आपको बेस कंडीशन संभालनी होगी एंड एक फंक्शन को इतनी बार कॉल करना पड़ेगा जिसमें वो अपना आंसर खुद ही दोगे, और वो कॉलिंग हमारी होती है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ. सो ओवर हियर अगर हम मैक्स डेप्थ फंक्शन में रूट अगर नल होता है, नल का मतलब है कि इसके आगे उसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, वहां पे वो आगे रास्ता नहीं है, वो खत्म है, वहां पे आपको रिटर्न जीरो करना पड़ेगा. अगर वो जीरो नहीं है, नल नहीं है, तब हम क्या रिटर्न करें. दिस इज ऑल अबाउट रिकर्जन. रिकर्जन सिर्फ इसी चीज का है कि आप क्या रिटर्न कराएं फंक्शन से या क्या कॉल करें फंक्शन में, ताकि वो बार बार खुद को रिपीट करके आंसर की ओर चला जाए. ओके, तो एक ही हमें आइडिया लग गया कैसे एक रिकर्जन को यूज करने वाले हैं. Like now on that return, we have to write pure recursion code where the return statement will recall the function and again to create a function to look like pure working node code. I'm sorry, which is included in this here as the solution. If you haven't think about that return statement क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्या कॉल करें, तो ये है वो चीज जो हम कॉल करने वाले हैं. इसमें है वन प्लस, जो कि ये वन शो करता है हमारे रूट नोड या सबसे जो टॉप नोड होगा उसको इंक्लूड करेंगे, और फिर हम लेंगे मैक्सिमम, और ये फंक्शन को कॉल करेंगे एक बार लेफ्ट के लिए, जिसमें पूरा लेफ्ट की नोड में जो मैक्सिमम डेप्थ होगी उसको लेगा. एंड सिमिलरली ये जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वहां पे जाएगा. दोनों साइड पे जाने के बाद इसको ये आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट साइड में जो सबसे गहरा हिस्सा है वो ये है, और राइट साइड में सबसे गहरा हिस्सा ये है. इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको प्लस वन करके रिटर्न कर देगा. इससे हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत कुछ समझाने के लिए है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर हम कोड लिखें, अगर हमारा रूट, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे तो एक बार और चेक कर सकते हैं. ये ऑब्सिडियन पे मैंने बनाया था एक ग्राफ टाइप से, बट इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग rather than just watching the video, and make try to make your own logic. It will help you later. तो इसको नल के बराबर अगर है, हम करेंगे रिटर्न जीरो, एंड अब आता है हमारा रिकर्जन फंक्शन जिसमें रिटर्न करेंगे वन प्लस मैक्स. होपिंग सबको ये पता होगा, ये मैक्स एक सी प्लस प्लस का इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में जो उनमें से मैक्सिमम होगा या सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको फाइंड करने के लिए. मैक्स डेप्थ रूट को उसके लेफ्ट में भेजेंगे. सिमिलरली कॉल करेंगे हम अपने मैक्स डेप्थ को रूट के राइट के लिए. होपिंग सब कुछ सही रहे. वन प्लस मैक्स, ओके, सो हमारे टेस्ट केस पास हो गए हैं. इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है रिकर्जन का वो ऑलमोस्ट सही है. अब इसको करेंगे सबमिट ताकि हमें रिजल्ट पता चल जाए. ओके ओके, तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है, हमने बीट किया है कुछ लोगों को. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. तो here's all about this question. Later we are gonna jump over some other question like LeetCode 100
LeetCode 226, and LeetCode 101. These are the basic tree question we can use so that we can understand the basics of tree. So today here's all about this question.